Ready. Then you come to that is the method of working. That is how Mendel, that is the carried out his experiment. That is the method of that is called as the method of that is the crossing. That is Mendel made the cross pollination. That is called as the artificial cross pollination. Artificial means Mendel do that in by their own effort. Clear? But se nije kole, that is called as the artificial crossing. Clear? That is the method of crossing. এই जो crossing कले से Mendel गोटे ए साइड रू आनले गोटे से साइड रू आनले सेटा कहला that is the method of crossing. Method of crossing. किमिति से क्रॉस कले. He took two plants. से दीटा गछ नेले. Suppose गोटे नेले डेंगा गछ tall and आउ गोटे नेले बांगरा गछ. That is method of crossing. Suppose he took a tall plant and he took a dwarf plant. Clear? Clear? गोटे डेंगा गछ नेले गोटे बांगरा गछ नेले. से डेंगा गछर हाइट केते थिला से जोटा नै थिले सेटा 100 रु 200 cm सेंटीमीटर पर्यंत तार हाइट था. बांगराटा थिला 22 रु 44 सेंटीमीटर पर्यंत तार हाइट. क्लियर? गुटा को से मेल भाविले एटा बुझी पर जेटा मेल चिन्ह एंड दिस इज दी फीमेल. आ जोटा को से फीमेल बोली कंसीडर कले. जहाँ को जेटा नेले हबो ए टॉलटा को भी बांगरा नेले नै बांगरा नेले नै फीमेल नेले हबो आ ड्वार्फटा को भी मेल नेले हबो. चलला. तो ए गुटा को बाछिले डेंगा गुटा को बाछिले मेल गुटा को बाछिले फीमेल. मने करो डेंगाटा को बाछिले मेल आउ एटा को बाछिले फीमेल बांगरा. गछ जतबळे फूल जतबळे मैच्योर हेई नाही जतबळे कढ़ अछि सेतबळे से कोन कले मु कहिछि एमती तार फूल गछ तार एमती तार भितरे थिबो तार भितरे एंड्रोसियम अछि आउ गाइनेसियम अछि. इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. टू हुम ही कंसीडर द फीमेल he destroy the androsium of that flower. सेही गछर से एंड्रोसियम गुड़ा को नष्ट कर देले केवल गाइनेसियम टा को ही रखिले. सपोज दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल. क्लियर? ए फूल को खुलिले से फूल को खुलिले दी ए जो बांगरा ये फीमेल फूलटा को खुलिले खुलिकी तार एंड्रोसियम गुड़ा को नष्ट कर देले. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इमास्कुलेशन. इमास्कुलेशन साहाय्य मास्कुलेशन माने मसल स्ट्रक्चर कार बेसी मेल बेसी तेणु इमास्कुलेशन ता नष्ट कर दिया गला. मेलटा को नष्ट कर दिया गला. मेल स्ट्रक्चर एंथर गुड़ा को भांगी दिया गला. एंथर रहिले तो पोलन ग्रेन तैयारी हो तेणु एंथर को भांगी दिया गला. देन आफ्टर ताको बंद कर दिया गला. एटा को पुणी बंद कर दिया गला जेमिति आउ तापर जेतले मैच्योर्ड हला जेतले गछ पुणी फूलटा मैच्योर्ड हला पूर्ण अवस्था हला सेतले कोन करा गला ना मेल गछर पोलन ग्रेन गुड़ाक नहीं कि फीमेल गछर गाइनेसम रो स्टिग्मा उपरे बुणी दिया गला. हला तापरे कोन करा गला ना तापरे जो एटा हला कोन क्रॉस करा गला. इट इज आर्टिफिशियल क्रॉसिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन. द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन. दैट इज द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर? देन आफ्टर तापर कौन करा गला फीमेल को आउ डेंगा कथा भूली गले आमे एटा को कथा भूली गले छाड़ी गले. एउट कोन कले मंजी गुडा को तयारी हला. मटर गछ बटर हला आउ से मटरु मंजी गुडा का में कलेक्ट कले. कलेक्ट करिकी ताको बुणी देले. हला कलेक्ट करिकी ताको बुणी देले. बुणी की ताको देखिले जे की प्रकार गछ होउची डेंगा होउची कि बांगरा होउची. मेंडल सेटा को देले. प्रथम जो मंजी गुड़ाक बाहरला ताकू प्रथमे ताकू कंसीडर कले से गुड़ाक हला प्रथम पीढ़ी. दैट इज फर्स्ट फिलियल जेनरेशन. फर्स्ट फिलियल जेनरेशन दैट इज कॉल्ड एज द F1. F1 that is the first filial
generation. That is called as the first filial generation, that is F1. आउ पेरेंट पाई सिंबल नेले P मेंडल बुझेवा पाई से प्रकार नहीं थे क्लियर जतले पुणी जो मंजी गुड़ाक नेले ताकू पुणी एलाउ करागला क्रॉस पोलिनेशन हो सेल्फ पोलिनेशन हो ताकू एलाउ करागला आपे आपे ताकर पोलिनेशन ला ताकतरु मंजी जतले नेले नेकी आउ थरे बुणिले दैट इज कॉल्ड एज द F2 generation, second filial generation. Clear? Then जेतोले पुणी थर्ड जिनस नेले that is first filial and second filial जेतोले पुणी आउ थरे आंक कतरु नेबे that is F3 third filial generation. In this way से generation पाई generation चलेले. Clear? बुझेला कि नहीं से जो गच्छ नेले ता भितर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नेले ता भितर जण को कले मेल आ जण कले फीमेल फीमेल गछर फूलटा मैच्योर हवा पूर्व ताकू खुलिले तार एंड्रोसोमटा को भांगी देले दैट इज बाय दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इमास्कुलेशन खाली गाइनोसोमटा को रखिले यार एंड्रोसियम जतले मैच्योर हैला दीटा पेक फूल ए डेंगा गछ बा अलगा जदि कैरेक्टर हिथिबो से मेल रो दार पोलेन ग्रेन उडा नै कि यार स्टिग्मा ऊपर पकेले कारण यार आउ पोलेन ग्रेन नाही क्लियर तापरे से जो फर्टिलाइजेशन हला ए जो प्रोसेस हला दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग जेहेतु एटा मनुष्य तयारी कला तिए निजे कला तेनु इट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल क्रॉसिंग क्लियर तापरे यार मंजी की कलेक्ट करागला से मंजी की बुणागला देखागला कि प्रकार गछ होउची दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फिलियल प्रथम पीढ़ी तांको कतरु मंजी नै कि पुणी आउ थरे पुणी की देखिले सेकंड पीढ़ी तापर नेले थर्ड पीढ़ी एमती परपीढ़ी पड़पीढ़ी की मेंडल कोन कले ना एग्जाम बा परीक्षा करी चलिले हला सो दिस इज दैट इज द मेथड ऑफ क्रॉसिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन एइथिरे से कौन कले ना मेंडल कौन कले ये जो प्रोसेस रे जो मेंडल देखिले जे ए प्रोसेस रे मेंडल जो कले से एटा को बुझेबा पाई मेंडल कौन कले ना किछि मेंडल कौन कले ना एगुड़ा को बुझेबा पाई से कौन कले ना किछि टर्मिनोलॉजी यूज कले बा टर्मडा यूज कले कौन कले ना T for tall, small t for dwarf नेले symbolically आउ P for parent and F1 first filial generation F2 for second filial generation ए प्रकार रे मेंडल सो टर्मिनोलॉजी यूज कले दैट इज P दैट इज द T स्मॉल t एंड P F1 F2 एवडा सो मेंडल यूज कले तापरे मेंडल कोन कले एमती परीक्षा निरीक्षा करी चलिले करी की कोन कले ना मेंडल एमती परीक्षा निरीक्षा करी चलले से जो करी चलिले से कहूची जे दैट इज द ये जो मेंडल एटा को करी चलिले एटा जो परीक्षा निरीक्षा कली दैट इज कॉल्ड एज इस दैट इज P plant the 2n is that is the 14 the 2n is its 2n is 14 यार क्रोमोसोम नंबर होची P plant रे 14 यार क्रोमोसोम नंबर होची 14 हला तेनु मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कले ताकू से चाहिए केते सहज आ भल भाव बुझे हम है ही ट्राई टू एक्सप्लेन इट सो फार सो इजी प्रोसेस क्लियर मेंडल ट्राइड टू एक्सप्लेन हिज एक्सपेरिमेंट इन दैट इज इजी प्रोसेस फॉर दैट रीजन ही डिवाइडेड द टू थिंग्स that is he divided the two things that is or the whole things into two parts clear one is monohybrid cross yes I have forgotten to tell one thing that is the process was called as the hybridization or crossing and the offspring which was formed that is called as the hybrid that is called as the hybrid that is called as the hybrid
So, in the monohybrid cross, he explained his whole process in two phases. One is monohybrid cross, another is dihybrid cross. One is monohybrid cross and another is dihybrid cross. Monohybrid cross means, mono means single. That is the hybrid. That is a cross between two plants differing in one pair of contrasting character. सेतले मेंडल जो एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड कले से केवल गोटे क्यारेक्टर कंट्रास्टिंग क्यारेक्टर को नहीं कले से गछर अनेक क्यारेक्टर थाई पारे से गछर टोटल 7टा क्यारेक्टर थाई पारे किंतु मेंडल मात्र गोटे क्यारेक्टर को कंसीडर कले अन्य सब क्यारेक्टर को इग्नोर कले दैट इज कॉल्ड एज दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. When he considered two pair of contrasting character, it is called as the dihybrid. Di means two. मेंडल जो क्रॉस कले जो से गोटे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को नहीं कंसीडर कले दैट इज मोनोहाइब्रिड. मोनो मीन्स सिंगल. एंड व्हेन ही टुक टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड एज द डाइहाइब्रिड क्रॉस. सो लेट मी डिस्क्राइब टुडे अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. What is the monohybrid cross? The monohybrid cross is a cross between two plants, two contrasting, that is two plants that is having or differing in one pair of contrasting character. Differing in only one pair of contrasting character. Monohybrid cross involves two parents during, that is the differing in a single pair of contrasting character. Differing in a single pair of contrasting character, or it is a cross between two plants differing in a single pair of contrasting character. Clear? In Mendel's monohybrid cross, he took one tall plant and another dwarf plant and he crossed there. And for tall, he take the symbol TT, that is, this is the P and this is the gamete. This is the genetical constituent TT. And for the dwarf, it is called as the small t, small t. तुम भितर कहीं क्वेश्चन उठी पारे जे याकू कहीं मु बड़ नेमी याकू कहीं मु छोट नेमी मु पर कहमी है कहीं याकू बड़ नेमी कहीं छोट नेमी ए खाली जान मु लिखुची तापर मु तार रीजन कहमी. तो ये तुम कहीपर टल पाई तो टी ने आई था दीटा टी कहीं निगला. क्लियर ना? आम जाचे वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय एटलिस्ट वन जीन और वन फैक्टर. मेंडल जीन ताको कही फैक्टर और डिटरमिनर. फैक्टर और डिटरमिनर से जीन कौन जानी नथिले तेणु से कही फैक्टर और डिटरमिनर. तेणु मेंडल कंसीडर करथिले वन फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर आउ गोटे बॉडी भितरे सेटा दीटा फैक्टर रहिबो फॉर वन कैरेक्टर. कारण गोटे आसीबो ता माँ कतरु गोटे आसीबो ता बापा कतरु. दिस इज फ्रॉम मदर एंड दिस इज फ्रॉम फादर. गेमेट थ्रो रे हाफ आसीबो एपटु आमे जानिछे हाफ आसीबो 23 आसीबो मदर साइड रो 23 आसीबो फादर साइड रो. क्रोमोजोम ता भितरे जो जीन गुड़ाक अच्छी जो मनकर गोटे जीन अच्छी दैट इज द हाइट पाई है तो हाइट पाई हेले दैट इज ए होमोलोगस क्रोमोजोम रहिबो. से होमोलोगस क्रोमोजोम सेम लोकस रे दीटा जाक जीन रहिबे तेणु एटा दीटा निया जीवो एटलिस्ट दुई निया जीवो है. बहुत एक्सेप्शन अच्छी गोटे कैरेक्टर पाई भी गुड़ाए जीन अच्छी बा गोटे जीन भी बहुत कैरेक्टर को करुच्ची से अलग कथा. बट मेंडल कंसीडर दैट इज two factors are responsible for one character. One factor is responsible for one character, but in an individual it remains in pair because one comes from his father, another comes from his mother. आमे जेमिति कहछि 2n माने 2 into 23. In case of the man it is 46. ताने 46 टा कोन हला 23 टा आसला बापा कतरु 23 टा आसला माँ कतरु ए टोटल हला 46 टा. तेणु जो होमोलोगस क्रोमोजोम हम ए को ए बी की बी एमती सब रहा जो जीन गुड़ाक रे जीन गुड़ाक समस्त एटा सेटा सामान होगी रे दे आर दि होमोलोगस क्रोमोजोम है. तेणु यार जीन जहाँ तार जीन से तेणु गोटे इंडिविजुअल एम पेयर होगी रे. सो इट इज 2 एंड इट इज 2. देन यू कम टू दि गेमेट.
गैमेट हेले कौन हम एन हो मियोसिस हम दिस इज टी एंड दिस इज टी एंड इट इज ऑल्सो टी एंड इट इज टी क्लियर तापर कौन हम ना आमे तांकू कौन करिबा ना क्रॉस करिबा हला क्रॉस कले F1 जेनेरेशन पाइबा कौन पाइले सॉरी एटा समान एटा दीटा जाक समान एटा दीटा समान एटू गुटे नवा जा एटू गुटे नसिया एगुडा को पाइले ये जत्ते पाइले जत्ते पाइबे जतले ये मंजी गुड़ाक से कलेक्ट कले नहीं कि बुणी देले ये सब गुड़ाक हला टॉल ऑल आर टॉल ऑल टॉल हला जेहेतु से सब गुड़ाक टॉल पाइले F1 जेनेरेशन ले प्रथम पीढ़ी रे सेइतपई टॉलटा को एठी डोमिनेटिंग कैरेक्टर दिया गला बा बड़ टी दिया गला जदि बांगराटा ही थांता ताले बांगराटा एटा को बड़ टी दिया ही थांता ये ये आसता F1 ले तेणु F1 ले जो कैरेक्टर गुड़ा आसी से गुड़ा सब कैपिटाल लेटर दिखाई आउ तार अपोजिटा को स्मॉल लेटर दिखाई बुझाला तेणु यहाँ तो जितेबाला यहीटा आसला दैट इज F1 जेनेरेशन ले से पाइले सब गुड़ाक टल से पाइले सब गुड़ाक टल सब गुड़ाक डेंगा गछ पाइले तापर से कौन कले ना F1 टाको पेरेंट धइले F1 टाको पेरेंट धइले धरिकी से आकु सेल्फ करिबा जहा क्रॉस करिबा सेया तेणु ताकु सेल्फ कले बा क्रॉस कले सो यू कम टू दिस वन दैट इज टी टी क्रॉस टी टी सेल्फ हो कि क्रॉस हो तेणु एटा हला यार गैमेट हला टी टी यार गैमेट हला टी टी दिस आर गैमेट्स क्लियर तापर कोन करा गला एटा जदी मेल हेथिबो एटा फीमेल एटा सेल्फ हैला जहा क्रॉस हैला सेया टीटी 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 ए प्रकार हम तेणु से बुणी देले देखिले तीनटा हला टॉल आ गोटे हला ड्वार्फ ए तीनटा हला टॉल तेणु दि रेशियो हला 3:1 दि रेशियो हला 3:1 तीनटा हला डेंगा and 1 is dwarf. So the ratio is 3:1 and it is called as the monohybrid ratio. Monohybrid ratio. The monohybrid ratio is commonly called as 3:1. 3 are tall and 1 is dwarf. Clear? Then after he allowed the self pollination in the flowers. He allowed the self pollination and he found that this type of pollination or this type of cross, in this type of cross he found only that is tall, only tall, no dwarf. And in this too he got that is the same ratio 3:1, that is the ratio, that is 3 tall and 1 dwarf. And from this category he found only the dwarf. केवल मात्र बांगरा पाइले एठी केवल मात्र डेंगा पाइले एठी मिक्स्ड पाइले तीनटा डेंगा गोटे बांगरा तेणु ए जो रेशियो टाकू से चेंज करदेले कौन ना 1:2:1 1 हला डेंगा ओनली टॉल 2 हला हाइब्रिड टॉल आ 1 हला प्योर ड्वार्फ दिस इज प्योर टॉल इट इज मिक्स्ड टॉल बा हाइब्रिड टॉल एंड इट इज द प्योर ड्वार्फ हला तेणु ये जो रेशियो हला 3:1 एटा को कहा गला फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो मोनोहाइब्रिड ratio and 1:2:1 it is called as genotypic ratio that is 1:2:1 that is called as the genotypic ratio and 3:1 is called as the phenotypic ratio. What is the meaning of phenotypic?
Phenotypic means that is the external characteristics, that is or the external appearance of the individual, and genotypic means the genetical constituent of that individual is called as the genotypic ratio. Clear? So you see here, that is, this is 1:2:1, that is 1 TT, that is it is pure tall, inside which there is no characters, there is no character of the dwarfness, and these two, both the tall and dwarf, both the genes are present here, and another here only the dwarf. So at that times there was no consideration of the gene, that is Mendel was, that is the consider as the factor or determiner instead of gene, because the word gene has not coined at that time. Clear? ସେତେବେଳେ ଜିନ୍ ୱାର୍ଡଟା କଏଣ୍ଡ ହେଇ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜିନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ ଡିଟରମିନର। ବହୁତ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଦି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଯେ ମେଣ୍ଡେଲ ଯେଉଁ କାରକ ଦେଇଥିଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅର୍ ଡିଟରମିନର। ସୋ 3:1 ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଦି ଫିନୋଟିପିକ୍ ratio of the monohybrid cross, and 1:2:1 is called as the genotypic ratio of the monohybrid cross. This is the genetical constituent, and this is the external expression of the individual by external characters, or externally, that is the individual appears 3 tall and 1 dwarf, but genetically these 3 are of, one is pure tall and another is hybrid tall, but this is a pure dwarf. So this is called as the phenotypic ratio, and this is called as the genotypic ratio. This is all about the monohybrid cross. Then from the monohybrid cross, and in this way he, that is the took 7, that is pair of contrasting characters, 7 pair of contrasting characters separately, and in all the cases he found only one character in F1 generation. For that reason, that is the character which was found in F1 generation was donated by the capital letters, and the characters which was, that is found in the, that is the which was not found in the F1 generation are considered in small letter. Clear? So that is from the, that is the monohybrid cross, Mendel concluded 3 laws. That is, let me describe one by one. That is first law, that is called as the unit of character. That is the first law of the Mendel was the unit of character. The first law was the unit character. That was the first law of the law of unit character of the Mendel was called as the law of unit characters. The law of unit character. This law, we can say that the one gene, one character. One gene, one character. That means Mendel said from his, that is the monohybrid cross, Mendel concluded that one factor, not gene, you take it, one factor is responsible for one character. Mendel considered that one factor is responsible for one character, and in an individual these factors are present in pair, मेंडल जानी नथले जीन कौन, मेंडल जानी नथले एटा किमितिका स्ट्रक्चर। मेंडल कहिथिले उटे किछि जिनिस अछि सेल भितिरे जोटा को ता ना देइथिले फैक्टर बा डिटरमिनर, जोटा कि गुटे कैरेक्टर तैयारी करिबारे साहाय्य कोछि। आउ सेटा सब बेले गुटे पेयर बा गुटे जुडाटियारे थाए गुटे इंडिविजुअल रे, आउ गुटे आसे ता मां कतरु, आउ गुटे आसे ता बापा कतरु थ्रू दी गेमेट गेमेट माध्यम रे गुटे आसे ता बापा कतरु, गुटे आसे ता मां कतरु, छुआ कतर बा गुटे इंडिविजुअल भितरे सब बेले एटा पेयर रे रुए। If it is pure variety, then it is similar.
जदि एटा प्योर वेराइटी सपोज टॉल इट इज टीटी इफ इट इज ड्वार्फ इट इज टीटी किंतु इन हाइब्रिड इट इज मिक्सिंग ऑफ बोथ गोटे टी आ गोटे स्मॉल टी तार माने दीटा कैरेक्टर रही डेंगार भी कैरेक्टर रहा बांगार भी फैक्टर रे दीटा रही दिस इज ए हाइब्रिड वेराइटी है इट इज इम्प्योर वेराइटी इट इज ए मिक्सड वेराइटी बट इट इज ए प्योर केस रे ए दीटा समान हो क्लियर आगुर कहला व्हेन ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंट्रास्टिंग माने अल्टरनेट गोटे बड़टी गोटे सानटी फैक्टर व्हेन द फैक्टर्स ऑफ ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रिमेन टुगेदर इन a pair of homologous chromosome in same loci is called as the alleles and one is allelic to the other one is allelic to the other suppose this is T and this is T and this pair is called as the alleles and large T or the capital T is allelic to small t and small t is also allelic to capital T. But nowadays it has been considered that is the same genes or the factors of the same factors remains in same loci of a homologous chromosome is also called as alleles. Clear? So that is Mendel, that is the consider or Mendel concluded the law of unit character from his monohybrid cross. He said that one factor is responsible for one character and in an individual these factors remains in pair. One comes from his father and another comes from his mother. If it is of pure variety then they are of similar type, that is if they are of that is the hybrid or impure then it is of a different. When a pair of factors that is when a pair of factors present in an or when an that is the factors of allelic pair present in an that is same loci or locus in a homologous chromosome then it is called as the alleles. But nowadays it has been said that is both the similar or dissimilar they are totally called as the alleles when they remain in the same loci of a homologous chromosome. Clear? And each one is allelic to other one, jane अन्य जनकर अनुपूरक. Clear? So this is called as the law of unit character. एटा किंतु परे काट खाई गला मेंडेल को परे एटा काट खाई गला कारण आर परे देखा गला जे वन जीन भी गुडाई कैरेक्टर पाई रेस्पोंसिबल आउ गुडाई जीन भी गुटे कैरेक्टर पाई रेस्पोंसिबल मोर देन वन तेणु एटा काट खाइला. तापरे दी सेकंड लॉ ऑफ डोमिनेंस. The second law, the laws of dominance. The law of dominance. The law of dominance कौन? Dominance माने देखे हवा बा अधिका हवा that is dominant. हला दी जन छुआ अच्छा जड़े भड़ भड़ होची सेटा हला dominating character आउ जे देखे होनी that is the recessive character. The law of unit character एटा भी बहुत बहिरे नाही that is the law of unit character and the law of dominant it is the first law and in some books that is the law of dominant is considered as the first law. The law of dominant or the law of dominance or the law of dominant, it said that the law of dominant that is the law of dominance. According to this, when a pair of contrasting when the factors of a pair of contrasting characters remains together, when the factors of contrasting character माने factors होची t बा factor होची जीन आ गोटा हला t contrasting माने बड़ t सान t present together माने सांगर थिबे. One is that is the expressible and another is suppressible. Another one is expressible जनर character देखै हबो आउ जनकर character देखै हबो नाही. तो जोटा देखे हला सेटा हला डोमिनेटिंग कैरेक्टर डोमिनेंट
character जोटा देखे हला नहीं, that is called as the recessive character. Clear? So the Mendel said that when a pair of that is when pair of contrasting, when the factors of a contrasting characters ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜିନ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଦେଖେଇ ହେବ ଜଣେ ଦେଖେଇ ହେବ ନାହିଁ. That is the when that is segregation when the pair of a pair when the factors of a pair of contrasting character when a pair of factors of contrasting characters remains together when the factors of when a pair of contrasting characters, that is when the factors of a pair of contrasting character when a pair of contrasting character when a factors of a pair of contrasting character ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେଖେଇ ହେବ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖେଇ ହେବ ନାହିଁ. ଯୋଉଟା ଦେଖେଇ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡୋମିନେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଦେଖେଇ ହେଲାନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିସେସିଭ୍ ହେଲା. ତ ଏଇଟାକୁ ମେଣ୍ଡେଲ କୋଉଠୁ କନସିଡର କଲେ ନା ମେଣ୍ଡେଲ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଦିସ୍ ଲ ଫ୍ରମ୍ ଦି F1 ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି monohybrid cross from the F1 generation of the monohybrid cross when he took 7 different that is contrasting characters. He found only one character in each case. That is, in case of the tall and dwarf, he found the tall. In case of red and white flower, he found red flower. In case of the axial and terminal flower, he found the axial. That is only the F1 character. That is the generation. So that is when that is the work on the that is the 7 that is different character or the alternate characters. He found only one contrast, that is the character in F1 generation. So he said that when the factors of a pair of contrasting characters when the factors of a pair of contrasting characters remain together, one is expressible, another is suppressed. So the expressible is called as the dominant and the suppressible character is called as the recessive. So, but this character was later on that is discarded, or this law was later on discarded as it was found that after the Mendel it was found that is the codominant and incomplete dominant and codominant. Incomplete dominant, that is I will narrate this in the next class.